चलो एंटरप्रेन्योरशिप का रिवीजन। एंटरप्रेन्योरशिप का रिवीजन। एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमशीलता सुपर पावर ऑफ द कंट्री। यूएस का जीडीपी अभी तक कितनी है? 35 ट्रिलियन। यूएस का जीडीपी कितनी है? 35 ट्रिलियन। इंडिया का जीडीपी है $4 ट्रिलियन। 4 ट्रिलियन डॉलर। और यूएस यूनाइटेड ऑफ अमेरिका का पॉपुलेशन कितना है? 30 मिलियन। और इंडिया का पॉपुलेशन है 1500 मिलियन। 1.5 बिलियन। 1.5 बिलियन इंडिया का पॉपुलेशन है। 1.5 मिलियन। बिहार का 13 करोड़। एक अमेरिका के व्यक्ति का इनकम और एक बिहारी का इनकम से 45 गुना ज़्यादा होता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? इंडिविजुअली क्रिएट हु क्रिएट बाय न्यू आइडिया। एंटरप्रेन्योर्स में एक न्यू आइडिया बिहाइंड करते हैं और हम लोग रिक्स लेने के लिए रेडी हो जाते हैं और इंजॉय फॉर रिवार्ड। और जो हम लोग बिजनेस से इनकम करते हैं यानी अर्न करते हैं, उससे हम लोग अपनी इनकम को यानी रिवार्ड लेकर इनकम कमाते हैं। And individually who create by new business and individually who create by creates a new business create by new business behind of the most risks behind of the most business of the new business 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 BUSI in yes business bearing most of the risks and enjoying most of the reward economy and individually who is created by new business। एंटरप्रेन्योर्स में हम लोग अपने आइडिया से एक न्यू बिजनेस को क्रिएट करते हैं और ऑफ द रिक्स एंटरप्रेन्योर रिक्स टेकर होता है एंड इंजॉय फॉर रिवार्ड। और उससे हम लोग का जो हम लोग का बेनिफिट होता है उसे हम लोग इंजॉय करते हैं। What do you need? What do you need? What do need?
to become of the entrepreneurship version of versions of the self-confidence version on in self-confidence version of the self-confidence. Entrepreneur entrepreneurship is the meaning about of the behind. Entrepreneurship is the meaning entrepreneurship entrepreneurship is the meaning is about behind ready of the create or organize and operate a business to make a profit even with the uncon- un- uncreates the classes example is starting a new startups is starting new business or startups. Entrepreneurship is the behind the new create. So, business of the next takers entrepreneurs. Entrepreneurship meaning is about being ready to create organize ready to create organize and operate a business to make a profit even with the uncreated uncreated the classic example is starting new business or startups. Entrepreneurship of the meaning entrepreneurship is the meaning about behind the ready created organized created by the business profit even with the under unconfused with the unconfusions is the unconfusion. ABCD देखना uncountries UN से खोजना UN ऑनर इसके बाद C ऑनर UNC यहाँ से शुरू UNC ठीक है अंकल UNC ER UNC ER UNC ठीक है on
अनट्रेन मतलब अनिश्चित, अनिश्चित। अनट्रेन मतलब अनट्रेन मतलब अनिश्चित। स्टार्टअप्स ऑफ द अनट्रेयर्स, अनट्रेयर मतलब अनिश्चित, 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 अनट्रेयर मतलब अनिश्चित। And the economically involves of the lands, labors, resource and संसाधन, and critically generate by profit, and critically generate by profit, and economically it the involves of the meaning, and critically is the involve, and critically involves use the land, labors, resource मतलब संसाधन, critically मतलब पूंजी, पूंजी to generate by profit, यानी हम लोग लैंड पर यानी ज़मीन पर और लेबर के यानी टीम के साथ एक कोई संसाधन संसाधन अपनी पूंजी लगा कर स्टार्ट करते हैं और उससे जनरेट प्रॉफिट कमाते हैं। यही एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप द ट्रेड और ऑन वर्जन डिस्कवरी, ट्रेड ऑन वर्जन डिस्कवरी एंड द टेकिंग रिस्क, डिस्कवरी एंड टेकिंग रिस्क। एंटरप्रेन्योर में थ्रेड ऑर्गेनाइज होता है, डिस्कवरी इसमें टेकिंग रिस्क ज़्यादा होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंटरप्रेन्योर में हार्ड क्या क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स हार्ड वर्किंग, इंफॉर्मेशन सिंकिंग, सभी इंफॉर्मेशन की जानकारी को या जानकारी के बारे में मालूम करना, जैसे न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से सभी कंपनी का स्टॉक्स एवं कंपनियों के बारे में होता है, और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। हार्ड वर्किंग यानी वो मेहनती होता है। ये एंटरप्रेन्योरशिप में कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है, कितना वर्क हो सकता है, इन्फिनाइट टाइम तक भी हो सकता है, यानी मैक्सिमम 8 आवर्स तो होता है वर्कर का काम, पर हार्ड वर्किंग में 14 घंटा, 15 घंटा, 23 घंटा, 22 घंटे तक वर्क हो सकता है। हार्ड वर्किंग इन्फॉर्मेशन सिंक मतलब हम लोग कहीं से भी अपना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो यानी एंटरप्रेन्योरशिप में वो उसका गुण होता है इन्फॉर्मेशन सिंक, वो अपना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहता है। क्रिएटिविटी रहता है। क्रिएटिविटी, रिस्क टेकिंग, पर रिस्क से नहीं डरता है और रिस्क लेने के लिए हमेशा रेडी रहता है। रिस्क टेकिंग, ऑपरेटिंग सिंक एंड द इंडिविजुअली ऑपरेटिंग एंड द सिंकिंग एंड इंडिविजुअली ऑपरेटिंग एंड द सिंकिंग इंडिविजुअली, वो ऑपरेट करता है सिंकिंग एंड इंडिविजुअली, वो डायरेक्ट नहीं कार्य करता है, दूसरे से कार्य करता है और अपनी इंफॉर्मेशनों को कलेक्ट करते रहता है। डिमांड फॉर द efficiency and the quality, demand of the efficiency and quality, demand of the efficiency and quality, इसका डिमांड इफेंसिटी होता है, इफेक्टिसिटी यानी उसका क्वालिटी, उनका डिमांड, एंटरप्रेन्योर्स का डिमांड प्रभावशाली होता है, प्रभावशाली में इफेक्टिसिटी कम्युनिकेशन, इफेक्टिसिटी और कोई बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। डिमांड फॉर द इकोनॉमिकली क्वालिटीज, प्रीजेंस मतलब सुझाव, गोल सेटिंग, इनका गोल सेटिंग होता है क्या करना है और अपने गोलों को छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं और उस पर वह कार्य करते हैं। ये सक्सेस का कुंजी है। अपने गोलों को चुनो और उसे छोटे छोटे पार्टों में तोड़कर उसे कंप्लीट करो और उसे कंप्लीट होने से उसका एंजॉय करो। नेटवर्किंग इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस मार्केट में मिलाना जाता है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद से लाया जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस दूसरे एंटरप्रेन्योर को देखकर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, या अपने अंदर की कमियों से लड़कर अपने अंदर की कमियाँ यानी हर रिस्क टेकिंग करते करते हम लोग का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंडिविजुअली आ जाता है। सेल्फ टेकिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स एंटरप्रेन्योर में कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हार्ड वर्किंग, इंफॉर्मेशन सिंकिंग, हार्ड वर्किंग
characteristics. Entrepreneurship एक हार्ड वर्किंग, दूसरा इंफॉर्मेशन सिंकिंग, रिस्क टेकिंग, गोल सेटिंग, individually and effective demand. Creativity, operating syncing and individually precedence, networking, independence and self confidence. हार्ड वर्किंग, इंफॉर्मेशन सिंकिंग, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एंटरप्रेन्योर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हार्ड वर्किंग, इंफॉर्मेशन सिंकिंग, क्रिएटिव, रिस्क टेकिंग, ऑपरेटिव एंड सिंकिंग इंडिविजुअली, डिमांड एंड इफेक्टिशियंस एंड क्वालिटीज, प्रेजेंस एंड गोल सेटिंग, नेटवर्किंग, independence and self confidence, independence and the self confidence. यहाँ पढ़े थे और सेल्फ कॉन्फिडेंस का इंडिया का जीडीपी $4 ट्रिलियन है। इंडिया का जीडीपी $4 ट्रिलियन है। इंडिया का पॉपुलेशन 1.5 बिलियन है। इंडिया का पॉपुलेशन 1.5 मिलियन है। यूएस का जीडीपी, इंडिया का जीडीपी 1.5 नहीं 4 ट्रिलियन डॉलर है। पॉपुलेशन कितना है? 1.5 बिलियन, 300 नहीं 300 तो यूएस का है, हम लोग का है 1500 मिलियन और यूएस का है यूएस का जीडीपी कितना है? यूएस का जीडीपी $35 ट्रिलियन है। $35 ट्रिलियन है। एंटरप्रेन्योर्स पे क्या होता है? एंटरप्रेन्योर में रिस्क टेकिंग होता है। वह अपने आइडिया को एक न्यू बिजनेस में से रिवार्ड। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? रिस्क टेकर होता है। उसके पास वो क्रिएटिविटी होता है, आइडियाज, न्यू बिजनेस एंड रिवार्ड यानी इनकम बिजनेस Entrepreneurship, entrepreneurs
Entrepreneurship is the meaning of the about ready creativity, organizations and operated business to make the profit even the with the unconfidences. With the classic example is the startups in the new business, and economically involves using land, resource and capital capi, capitals uh, capitals capitals and the generate by profit and resource and sadhan. Entrepreneurship the threats on the version discovery and risk taking. Characteristics क्या था? Characteristics of entrepreneur hardworking, information seeking, creative creating creative, risk taking, operating and sinking individually. Demand of the effectivity, quantity, risk, previsions, goal setting and networking individually, individually and the self confidence.